So from last Wednesday, 1st of September, we started chapter number 6. It is related to the branch of physics which is sound. Unit is sound. Patil Madam already explained the basic fundamentals about the wave motion. That is behavior of particle if the disturbance is passed through the given medium. We proceed further today to study the behavior of particle of the medium if two or more than two waves arrive at that point simultaneously. It is called superposition of waves. So, two or more than two waves can reach the point of the medium simultaneously, and then the effective behavior is due to effect of these two waves arriving at that point at the given instant simultaneously. So this is called phenomenon of superposition. So up till now you studied the behavior of particles of the medium when from particle to particle only a single wave reaches at different instants. From today we'll continue with the discussion studying superposition of waves. More than two or at least two waves reach the particle simultaneously at the given instant. We restrict our discussion. Actually, this superposition of waves is observed for all kinds of waves like sound waves, light waves, electromagnetic waves, etc. But for this chapter, we will restrict the discussion to study superposition of sound waves. Three basic phenomena take place depending on the conditions of the waves superimposing when two or more than two sound waves superimpose on each other. One is interference, second is formation of stationary waves, and third is formation of beats. So these three phenomena occur during superposition of waves. So which phenomena take place when this superimposition is observed? That depends on the factors amplitudes of waves superimposing, frequencies of waves superimposing, also the phase difference between the waves superimposing on each other. Also depend on the direction of motion of waves. Do they are in same direction? Are they moving along same line? These all factors affect the superposition of waves. So we will study this phenomenon in detail analytically as well as practically one by one. So for convenience, let us discuss the superposition of only two waves. The results obtained while studying superposition of two waves can be generalized if more than two superimpose on each other. So let us consider the waves superposing of equal magnitude or of equal frequencies or all of equal amplitudes. Let moving in same direction. Let moving in same direction on one straight line. Different permutation combinations can be selected. In the simplest case, we will discuss initially the superposition of waves only two in number.
let that waves have same frequencies उनकी सेम है ऐसे assume करते हैं. They may have different amplitudes, slightly different amplitudes. A1 इसका और दूसरे का A2, and they when assume they are moving in same direction. If one wave moves in positive direction of x-axis, the other should move in same direction. Let us assume these waves moving in one straight line. ऐसे हम लोग assume करते हैं. उसका एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ. जब हम लोग ग्रुप सॉन्ग बोलते हैं ना, ग्रुप सॉन्ग में क्या होते हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. These students sing the song and such students are selected whose frequencies of vocal cord are same. ऐसे बॉयज गर्ल्स सिलेक्ट किए जाते हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं ग्रुप सॉन्ग के लिए कि जिनके फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से मैच हो जाती है. दे फॉर्म अ क्लोज सेमी सर्कल. अगर 4 से ज्यादा ग्रुप में लोग हैं तो दे फॉर्म क्लोज सेमी सर्कल. यानी कि क्या, जो सामने ऑडियंस है ना, एंड दे स्टार्ट द सॉन्ग एट द सेम इंस्टेंट. एक ही टाइम पे चालू करते हैं, आगे पीछे नहीं दोहराते हैं, एक साथ दोहराते हैं. तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सब वेव्स साउंड वेव्स है. ऑल दीज साउंड वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज, बट हर एक का टोन लाउडनेस अलग अलग हो सकता है. तो एम्पलीट्यूड्स दोनों सब वेव्स के क्या है, अलग अलग है. एंड व्हेन दे सिंग द सॉन्ग इन ग्रुप, all they are facing towards the audience. यानी कि हम लोग ऐसे assume करते हैं all these waves are moving in same direction and almost along the same line. Parallel है actually, ये दोनों है साथ में गाना गा रहे हैं. Almost for a distant audience, वो दोनों along the same line waves move हो रही है. And such is the situation for group song, for superposition of waves having same frequencies but slight different amplitudes. So this is the practical example for superposition of waves having same frequencies but slight different amplitudes, all waves moving in one direction almost on one straight line. They parallel भी move हो सकते हैं, but the distance between two parallel waves should not be much greater. They should be very close. और जब भी क्लोज खड़े करते हैं ना ग्रुप सॉन्ग के लिए ग्रुप को, तो ही ये पॉसिबल है. तो हम लोगों को एक इफेक्ट मिलता है. If they start singing the song at the same instant, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है, ड्यू टू सुपरपोजिशन वी हियर अ लाउड साउंड. नॉइज नहीं आता है, हम लोगों को जोर से गाना सुनाई देता है. यू हियर अ लाउड साउंड and we have to study the same analytically by stating few equations. This is called interference, phenomenon of interference. We consider analytical treatment assuming only two waves, same frequencies, a slight different amplitudes in same direction along same straight line, travel in the medium, and simultaneously we arrive at different points of the medium at different instants. सबको एक साथ आवाज नहीं जाता है, वो प्रोग्रेस हो जाती है ना उसको. तो पॉइंट्स में जब भी अराइव होती है तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम आते हैं. सपोज वन बॉय और वन स्टूडेंट starts his song a little later, a fraction of second later. तो क्या हो जाता है, सबका एक साथ चालू नहीं हुआ है. So all this will not be in phase. Phase difference कभी कभी आ जाता है. Suppose two waves arriving are have
having phase difference phi, उन लोगों का फेज दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस phi है, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं. So I am considering the first case in which we are studying mixing of two sound waves having equal frequencies, slight different amplitudes, moving in same direction and along one single straight line. सेम डायरेक्शन में सिंगल लाइन के ऊपर मूव हो रहे हैं, ऐसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं. They can arrive the point in phase, out of phase or with phase difference phi between 0 and 2 pi. फेज कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर आप लोगों ने फेज कंसेप्ट स्टडी की है. तो फेज यानी क्या? Each particle has different state of oscillation. For example, if you consider a single wave passing through the medium, these are its particles. Medium के particles है. The wave is not reaching all the particles at the same time. Let us assume at time t is equal to 0, disturbance is created at particle A. मैंने A पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल को थोड़ी सी एनर्जी दे दी है. So what will happen? It will start oscillating, and that energy it will propagate to each succeeding particle. So after receiving energy from preceding particle, particle number 2 will get set in motion. Number 3, 4, 5 are still at rest. Initially at equilibrium all particles will be at rest. सब particles रेस्ट रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे. जब भी डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल के ऊपर क्रिएट किया जाता है, एंड जनरली इफ यू कंसिडर द ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स वेव है ऐसे एज्यूम करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो अगर एक साइड पे वेव जाती है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अलोंग वाई डायरेक्शन. सो एट एनी इंस्टेंट द state of oscillation of particle is represented by y, and it is the function of its position from the equilibrium. Initial at time t is equal to 0, the disturbance is created, suppose at first particle. So at first particle what will be state of oscillation? A sin omega t. ऐसे तुम assume करते हो. So when disturbance is created, एम्पलीट्यूड कितना लिया हम लोगों ने? ए, साइनोसॉइडल फंक्शन है. सो ईच सक्सीडिंग पार्टिकल विल रिसीव एनर्जी अ लिटिल लेटर ऑफ ईच प्रीसीडिंग पार्टिकल एंड विल गेट सेट इन मोशन. तो ऐसे आगे 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 प्रोपगेशन होता है. सपोज विथ प्रोपगेशन the particle 5 is stay up, the disturbance has reached up to particle 5. ऐसे हम लोग assume करते हैं कि particle 5 के तक गया है. तो these two particles at first particle and fifth particle are said to be in same phase because it is likely to move in upward direction. This particle also is likely to move in upward direction. So particle 1 and 5 are said in phase with each other. If the phase difference कितना हो जाएगा? ये 90 plus 90 180 plus 90 270 plus 90 will be 360. So if phase difference is of 2 pi, that is path difference. Path difference कितना बनता है? Equal to wavelength of the wave which is propagating. So path difference lambda corresponds to phase difference of 2 pi. That time these two particles are said in phase with each other. Their state of oscillation should be same. Particle 1 and 3 are not in phase.
Both are at rest at mean position, but particle 3 is likely to move in downward direction. So even they are in mean position, particle 1, 3 are not in phase, but particles 1 and 5 are said to be in phase with each other. Otherwise, for all positions, the two particles will be out of phase. ये पार्टिकल नंबर 2 लिया, पार्टिकल नंबर 4 लिया, तो ये पार्टिकल नंबर 1 से ऑलवेज आउट ऑफ फेज ही है. कितने एंगल से वो हम लोगों को ढूंढना है, समझा? दिस इज कॉल्ड फेज, एंड ड्यू टू दिस फेज, these waves which reach simultaneously, we are assuming the two waves which are superposing at the same particle. ये मीडियम का एक पार्टिकल है, इधर से एक वेव आती है और दूसरी वेव आती है, बट दे आर नॉट इन फेज. तो क्या होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ फेज दिखाते हैं. So when these two reach at this particle, this wave's particle, its displacement produced will be 0, and this wave will produce displacement of this particle and will take this particle a little up. तो ये out of phase हो गए. They are not producing the same displacement at the given particle of arrival. So these are called out of phase. There is phase difference between two waves arriving at that particle simultaneously. तो हम लोग क्या assume करेंगे, the phase difference between the waves let be phi. ऐसे हम लोग assume कर सकते हैं. So they will be out of phase. So when such happens, what will be its effect on the behavior of particle? ऐसे वेव जब भी रीच होते हैं तो उसका बिहेवियर पार्टिकल का कैसा बनता है, दैट इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग दिस फिनोमेना. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स arrive of a particle simultaneously, each wave behaves as if the other wave is absent. Each wave produces its own displacement at a given particle, and resultant displacement of a particle is vector sum of displacements produced by all waves reaching simultaneously, arriving simultaneously at that point. ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है. तो क्या होता है, इधर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है. जनरली यू आर टॉकिंग अबाउट लॉस साउंड वेव, इट इज ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल टाइप. सो व्हेन इट पासेस थ्रू द मीडियम, प्रोपगेट थ्रू द मीडियम हैज डिवाइडेड इनटू कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस. मैंने जो डायग्राम डाली है ना, तो मैंने वो डायग्राम साउंड वेव की नहीं डाली थी. एक्चुअली व्हेन यू स्टडी डिफरेंट फिनोमेनॉन ड्यू टू superposition of sound waves, in a diagram rarefactions and compressions should be shown. So when compression of one wave reaches the particle and the compression of second wave at the same instant reaches the same particle, then what happens? The particle will have pressure density. उसका प्रेशर कम ज्यादा हो जाएगा ना, compression और rarefaction के हिसाब से, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. लेकिन ड्यूरिंग ड्राइंग, while drawing diagrams, studying analytically, generally the diagrams are drawn for the superposition of waves which are of transverse type, जिसमें crest और trough alternate तैयार हो जाते हैं. तो डायग्राम के लिए क्या है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन नहीं दिखाते हैं. जनरली दे शो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स फॉर कन्वीनियंस, फॉर सिंप्लिसिटी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स वी नेवर गेट क्रेस्ट एंड ट्रेप्स, कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन. एंड कॉम्प्रेशन हुआ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड रेरिफैक्शन हुआ
और सुपर इम्पोज दोनों के हो गए, तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डाउन डायरेक्शन and maximum displacement in upward direction. So compression rarefaction दिखाना चाहिए, लेकिन for the convenience they generally show to study the theoretical part, the formations of crests and troughs. हाँ, तो जनरल केस लेते हैं और आगे जाते हैं. So let us study the formation और द एम्पलीट्यूड. अभी एम्पलीट्यूड के बारे में शुरू करते हैं. आई एम डीलिंग विथ द पार्ट पॉइंट 6.4.3 ऑन पेज नंबर 136. मैंने 136 का 6.4.3 अभी चालू किया. टुडे आई स्टार्टेड विथ पॉइंट 6.4 ऑन पेज नंबर 134. 134 के ऊपर 6.4 हाईलाइटेड है रेड कलर में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ये मैंने चालू किया. ड्यूरिंग सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स superposing simultaneously occurring at a given point, different phenomenon, basic three: interference, stationary waves and beats. These three are formed under different conditions. We today are studying the superposition of two waves having equal frequencies, almost equal amplitudes. Amplitudes you can take a little different from each other, moving in same direction and along one single straight line. उसका अगर सुपर इम्पोजिशन हो गया जाता है तो आगे क्या होता है ये हम लोग लर्न कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट 6.4.3 ऑन पेज नंबर 136 नाउ. आता मैं अभी वो उसके बारे में मैं बोल रही हूँ. ऑन द नेक्स्ट पेज दे हैव गिवन आर्टिकल 6.5. उसमें स्टेशनरी वेव का जिक्र किया है. एंड ऑन पेज 1 मिनट आई विल टेल यू. वन 6.9 they have given the phenomenon of beat, stationary wave, beat, interference. All phenomenon occur due to superimposition of sound waves only. यानी कि ये तीन फिनोमेना हम लोग साउंड वेव के बारे में स्टडी कर रहे हैं. टू हैव सुपरपोजिशन ऑफ वेव साउंड वेव्स for formation of stationary waves, conditions are quite different. For formation of beats, conditions are also different. Beat में क्या होता है? Two waves which are superimposing should have equal amplitudes but should have slight different frequencies. जब भी दोनों साउंड वेव्स हम लोग लेते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज बिटवीन द टू, बट टेंशन एम्पलीट्यूड्स आर ऑलमोस्ट इक्वल. व्हेन सच साउंड वेव्स superimpose on each other, we get formation of beats. स्टेशनरी वेव में क्या होता है? The two waves should have same amplitude. Two waves should have same amplitude and both should move along straight line. They should have same period only in opposite directions. ऐसा हो जाता है. So one by one you are studying all these phenomena. So when two waves along same line and they might come in phase at a point or they might be out of phase through certain angle phi when reach at the given point. Such gives you the phenomenon of interference. मैं बीट का एक एग्जाम्पल आपको बोलती हूँ. वो जो एम्बुलेंस रहता है, एम्बुलेंस में एक सायरन होता है. वो सायरन का हमारा क्या इंटेंसिटी कैसा लगता है? अप डाउन ऐसा आवाज आता है ना. तो कभी इंटेंसिटी ऑफ
साउंड हर्ड ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ मिनिमम टू वेव्स, वो भी टू वेव्स, वो जो एम्बुलेंस है उसके अंदर एक एलसी ऑसिलेटर बिठाया रहता है, एंड दैट एलसी ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस टू वेव्स साइमल्टेनियसली एट द सेम इंस्टेंट बट हैविंग सर्टन स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। तो क्या होता है, when ambulance goes passes through us, that two waves reaches our ear, बट जब भी वो वेव्स हमारे यहाँ आता है ना, तभी क्या होता है, बिग फॉर्मेशन बीच में होता है, एंड यू हियर अल्टरनेट अ लाउड साउंड, अ डीम साउंड, लाउड डीम, लाउड डीम, तो उसको बीट बोलते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट साउंड वेव्स की अलग है। स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन में एक रिक्वायरमेंट ऑफ टू साउंड वेव्स सुपरपोजिंग ऑन ईच अदर, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। और अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, वो तो सिंपल केस है, ग्रुप सॉन्ग वाली। ग्रुप सॉन्ग में क्या होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी, कोई ब्लैक 2 में गाता है, कोई ब्लैक 4 में गाता है, तो ब्लैक 4 वाला और ब्लैक 2 वाला ऐसे हम लोग कंबाइन करते हैं, नहीं करते हैं। वी चूज ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज, जो अभी मैंने बोल रही हूँ ना। तो क्या होता है, जब भी ऑल दीज वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज अ स्लाइट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ऑलमोस्ट एम्पलीट्यूड हम लोग सबको बोलते हैं एक साथ गाना है, एक साथ, यानी कि ऑल दीज वेव्स विल बी इन फेज विथ ईच अदर, फाइव इज इक्वल टू 0। जब भी पहली वेव कॉम्प्रेशन क्रिएट करेगी ऑडियंस के यहाँ, तभी दूसरी वेव भी उधर कॉम्प्रेशन ही क्रिएट करेगी। और हम लोग सबको बोलते हैं, अरे सब लोगों का लाउडनेस एक ही रखना है, एक एकदम कम आवाज रखता है, एक एकदम बड़ा आवाज रखता है। लाउडनेस ऑल्सो यू कीप जनरली द सेम, तो वो इंटरफियरेंस है। और ड्यू टू इंटरफियरेंस व्हेन ऑल दीज वेव्स रीच अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, सपोज द ऑडियंस, ऑडियंस यानी कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम ही है ना, तो ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑल दीज वेव्स बीइंग इन फेज, दे assist each other and they produce maximum resultant displacement and you hear a loud sound, बट नॉइज नहीं है ना, आगे पीछे चालू नहीं होना चाहिए, सब एक साथ गाएंगे तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये हम लोग लेते हैं। तो मैं अभी जो बोल रही हूँ ना केस, उसमें इंटरफियरेंस चालू होता है, पीछे आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, डार्क टू डार्क, और इट शुड नॉट बी दैट वे। सो नेक्स्ट टाइम we will discuss analytically the formation of interference, rearrangement of energy। उसमें क्या होती है, एनर्जी लैप्स नहीं हो रही है, लेकिन एनर्जी ऑफ द मीडियम इज गेटिंग रीअरेंज्ड, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट एट ऑल। जो एनर्जी मीडिया में प्रोपगेट हो रही है उसका खाली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई कई जगह ज्यादा होती है, कई कई जगह थोड़ी कम हो जाती है। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट इज इंटेंसिटी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ दिस टू वेव्स। बट लेकिन टू वेव्स की कंडीशन क्या है, दे शुड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज। ग्रुप सॉन्ग में देखो एक दूसरी एक साथ नहीं गा रहे हैं तो मेलोडियस लगता है क्या, एक की फ्रीक्वेंसी अलग, एक ने दूसरे ट्यून में गाना चालू किया, एक की पट्टी है ना कॉर्ड है ब्लैक 4 की, दूसरे की वॉइस है ब्लैक 2 की, और ब्लैक 2 ब्लैक 4 एक साथ चालू किया तो सिंक्रोनाइज होगा क्या, सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, तो इंटरफियरेंस हम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। सो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ग्रुप सॉन्ग। जब भी हम लोगों को सिंगल एक जन बोलता है तो मेरे को सुनाई नहीं देता है, लेकिन वही बहुत सारे जन एक साथ बोलते हैं हैविंग सेम फ्रीक्वेंसीज, तो लाउडनेस बढ़ता है, एंड दैट ऑडियंस स्टिल द डिस्टेंट ऑडियंस कैन ऑल्सो एबल टू हियर व्हाट इट इज डन। स्पीकर यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं ना, वो तो अकेला बोलता है, लेकिन विदाउट माइक इफ यू वांट टू हैव दैट एट डिस्टेंट पोजीशन,
Instead of single person, we choose the combination of number of persons, but they should have equal frequencies. They should start the song at the same instant. So in phase है तो एक का compression आएगा तो वही जगह दूसरा wave का भी compression ही उधर होना चाहिए. Then compression will produce maximum displacement in upward direction. Intensity maximum हो जाती है. So next time we will study analytically the treatments of all these phenomena one by one. Winding the meeting for all, you can join the next meeting.